Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, um, welcome to the class. So today we are going to talk about India-Pakistan non-attack agreement. Non-attack agreement is solely meant for the non-attack on the nuclear installations. Both countries decided that we are not going to attack each other's strategic locations, whether they are civilian or military. और स्पेसिफिकली द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस. तो फोकस किसके ऊपर था? न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे ज्यादा फोकस था. ये एग्रीमेंट, व्हाट वाज द बैकग्राउंड, व्हाई इट वाज कैरिड आउट, what was the motivation behind, we need to understand that first of all. So as a student of Pakistan strategic studies, we know that since 1947, India and Pakistan, they have got some many unresolved issues, including Kashmir, including arms race and other things related to that, water issue. Both fought many wars also, especially war in Kashmir in 1947, 48, 49. Then you had a war in 1965, major war. 1971 war was the most destructive war for Pakistan, and of course after that the region saw nuclearization. India brought nuclear weapons in 1974. We have already covered these things, these topics, and Pakistan reciprocated, and Pakistan also got nuclear weapons after that in the 80s. Now, what is the background? Why we are discussing this particular subject? The background is simple. When India got nuclear weapon in 1974, and at the same time, another country in another region in Middle East was also acquiring on the route to acquire nuclear weapons, and that was Israel. Israel, after a very narrow escape in 1973 war against Arab, collectively Arab countries, especially led by Egypt and others. In that particular war, Israel faced narrow escape from defeat, because it was very, very, you can say, it was Yom Kippur war. It is called Yom Kippur war. And it was, devastating for the Israelis, because it was surprise for them. So they were on the verge of collapse until the United States of America came for their help, provided them space imagery and other things, accurate information about the Egyptian forces, and they carried out counterattack, and they were successful later on. Okay, after that, Israel thought that now is the time to acquire ultimate weapon, and that is nuclear weapon. Because if they don't get nuclear weapons, definitely the Arabs may attack again. So they decided to go for nuclear. At the same time, they also decided to destroy the nuclear program of other countries, especially the Muslim countries who are going to develop nuclear weapons. So initially in 1982 or 81 probably, they destroyed the Oswick nuclear plant of Iraq, and that nuclear plant was destroyed. And during that period, Saddam Hussein, he could do nothing about it. After that, now this is the same period, 80s, early 80s, when Pakistan was also close to become a nuclear weapon state, because Pakistan also speed up its program after the Soviet invasion of Afghanistan in 77, and later on when Americans put a blind eye towards Pakistan's nuclear weapon program. So that was the golden opportunity for Pakistan. So we carried out work in double shifts to acquire nuclear weapon quickly. So Pakistan was also close to it. Pakistan carried out cold test in 82 to 86. We carried out many hundreds of cold tests on supercomputers. So that was the same era when Israel and India, and against a common enemy, Pakistan, of course, they decided to destroy Pakistan's nuclear program.
And when they decided to do it, Pakistan also reciprocated, and Pakistan also prepared itself. And Pakistani Air Force was vigilant when they wanted to, carry out incursions in Pakistan. So when they saw the vigilancy of Pakistan, and when Pakistan also reciprocated to the Indians, communicated to the Indians that if they try to attack Kahuta, we are not going to spare any facility of India also. So India could not attack Pakistan, and Israel also had to deviate the plan. And this was the moment when India and Pakistan realized that this is a real threat. And attacking each other's nuclear installations would have far reaching implications for the region. And both they had the capability, let me tell you. Israeli Indians had the Russian aircraft, Pakistani had superior aircraft, F-16s and others from the US and France. Mirage type के हमारे पास भी थे कुछ इस तरह के जहाज. So that is the background. That is the background. So to avoid nuclear fallout in this region, Pakistan and India decided to sign and decided to, carry out a treaty pact that we are not going to attack each other's nuclear installations. So it was signed in '88, and ultimately it was, entered into force in 1991. So this was the era which is called as covert nuclearization, because Pakistan had nuclear weapons by that time, but Pakistan never declared openly until the A.Q. Khan's interview after brass tacks exercises. But the world never knew about it, that we really had nuclear weapons, because we never tested it. So it was kind of bluff for the Indians. It was kind of bluff for the West. They always questioned it until we carried out tests in 1998 and let the world know that we are a nuclear weapon state. So this is just a backgrounder, and let's understand the why both countries decided to go for it, why they carried out this particular thing. India and Pakistan non-attack agreement is a unique bilateral agreement between two countries that expands in sense the scope of Article 56 and 15 of the first and second protocols of the Geneva Convention, which talks about these things, that you should not attack each other's facilities. These articles state works or installations containing dangerous forces, namely dams, nuclear electrical generating stations, and shall not be made to object of an attack. So this was the main focus. So it covers everything. It covers your strategic installations, your missile sites, your reprocessing sites, your assembly sites where you have kept your assembling your weapons, or your storage sites where you have stored your nuclear warheads. It should not be made under attack. It should not come under attack, actually. So even there, these objects are military objectives. If such attack may cause the release of dangerous forces, यानी कि अगर nuclear fallout होता है कोई, इंडिया अटैक करते हैं या पाकिस्तानी अटैक करते हैं इंडिया की nuclear installations पे, it would have nuclear fallout definitely. So the civil population is going to face the brunt, and they are not going to be saved from that particular attack. So that is something very, very dangerous thing which we need to understand. So this is the rationale behind that both sides must avoid any nuclear attack on any nuclear installation, because the fallout would be on the civilian population. The agreement provide for refraining from undertaking, encouraging, यानी कि किसी को encourage भी नहीं करना कि जाओ अटैक करो, और participating indirectly और indirectly, यानी कि किसी नॉन स्टेट एक्टर के जरिए से भी नहीं करना कि नॉन स्टेट एक्टर को पैसे दे के आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक करवा दो, कुछ सुसाइड हमला करवा दो. Any action aimed at causing destruction or damage to any nuclear installation, any nuclear installation का मतलब है it covers everything, civil or military, or facility in each country. So this is the very, very, very comprehensive provision which clearly talks about that any nuclear installation, whether it's civil or military, will not be come under the attack, and indirectly or indirectly. It describes nuclear installation or facility and requires each
party to inform the other the precise locations, latitude, longitude of the installations and facilities by 1 January of each calendar year. तो इसमें क्या होता है कि इसमें you share the list of your installations. हर साल में आप जो है ना अगर कोई नई installation बना रहे हैं तो you share that list. We and India and Pakistan they have shared many such lists. लेकिन बहुत सारी जो आपकी प्रोसेसिंग रीप्रोसेसिंग साइट्स होती हैं, स्टोरेज साइट्स होती हैं मिसाइल्स की वगैरह की, उनको आप अंडरग्राउंड रखते हैं और उनको आप छुपा के रखते हैं, उनकी आप नो हाउ शेयर नहीं करते, आप सिर्फ जो ओपन होती हैं उसको शेयर करते हैं जिनका सबको पता होता है, सिविल स्पेशली। तो उसके ऊपर भी वैसे क्वेश्चन उठता है, कभी भी आपस में दूसरे से शेयर नहीं करते क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता ना। And whenever there is any change, the agreement does not provide for detailed disclosure of nuclear-related activities. तो जब भी कोई चेंज करें, नई इंस्टॉलेशन बनाएं, उसको एक्सपैंड करें, तो you share that information. Not necessarily with nuclear, missiles and other technologies, जो कि आपकी strategic nature की हैं, वो आप शेयर नहीं करते मेरा ख्याल है. So this is something which is there. The agreement does not provide the details for disclosure of nuclear related activities. अच्छा, इसके अंदर आपने ये नहीं बताना कि हमारी फ्यूल कैपेसिटी कितनी है, हम कितना रीप्रोसेस कर रहे हैं और हम कौन से वेपन्स बना रहे हैं, उनकी what are the ranges of those weapons, what are the other payload and yield power of those weapons. No, we are not liable to discuss these things in that particular agreement. Only the locations. They are interested in only locations. The agreement defines nuclear installations or facilities against which attack is prohibited. Nuclear किन facilities के ऊपर आगे further वो कहता है कि आपने attack नहीं करना, उनको उन्होंने बड़ा comprehensively cover किया. Like for example, they are talking about the nuclear power and research reactors. अच्छा, न्यूक्लियर जैसे हमारा कैनूप है, चश्मा 1 2 3, कैनूप 1 2 अभी आ रहा है और these are some of them. Then you got research reactors हमारे थे, पार 1 पार 2 इस तरह करके, और भी बहुत सारे हैं. फ्यूल फैब्रिकेशन जिसके अंदर आप ये सारा करते हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट जहाँ पे होती है, आइसोटोप सेपरेशन जहाँ पे होती है, रिप्रोसेसिंग फैसिलिटीज, तो उन्होंने तकरीबन ये नाम लेके इन सारी जगहों को कवर किया जिसके अंदर सिविल और मिलिट्री दोनों काम होते हैं. So as well as many other installation with fresh or irradiated nuclear fuel and materials in any form, and establishments storing significant quantities of radioactive materials. कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे radioactive material, nuclear related material for civil or military purposes stored or there, present there, both countries would avoid attacking that particular place. So this is the simple agreement in which it is trying to convince both sides that they should avoid such things. इसके अंदर एक बहुत छोटा सा लकूना है, वो हम डिस्कस करते हैं. For example, India has consistently proposed extending the agreement to include non-attack on civil and economic targets also. लेकिन पाकिस्तान इसको रिजेक्ट करता है. पाकिस्तान says no, we don't agree with this. उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान का जो फर्स्ट यूज ऑप्शन है, जो डिटरेंस की हमारी बेसिक एलिमेंट है, दैट इज फर्स्ट यूज, और हमने उसको कहा हुआ. Why? Because we don't have strategic depth. So Pakistan says that attack on the civil and economic targets होगा ताकि आप हम पे अटैक ना कर सकें. So basically it is core of Pakistan's nuclear deterrence. अगर पाकिस्तान कह देता है ठीक है जी हम कोई भी अटैक नहीं करते, तो basically you are undermining your own deterrence, which is first use. And क्यों आपने की हुई है? Because आपके पास strategic depth कम है, आपकी conventional forces कम है, you don't want to risk any war in this region. तो इसलिए पाकिस्तान ने इसको agree नहीं किया. However, India's nuclear doctrine involves India ने अपने जो doctrine 2003 में अपना publish किया, in that particular doctrine India clearly mentioned that they are going to use nuclear weapon in case of threat of nuclear, biological, or chemical attack against Indian forces anywhere in the world. और अगर उनकी civil population पे भी attack होता है तो they are going to retaliate massively.
So they tried to counter the Pakistani doctrine also. So this is how both countries work. Thus, the likelihood of expanding the agreement to include counter value non-military targets may now be small. तो अभी जरूरी नहीं है कि ये चीजें एंटर हो जाएं इसके अंदर. पाकिस्तान इस पे एग्री नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान की जो फर्स्ट यूज ऑप्शन है वो डिफाइन नहीं करता कि वो फर्स्ट यूज किस पे होगा. फर्स्ट यूज नॉर्मली आप काउंटर वैल्यू और काउंटर फोर्स दोनों पे करते हैं, और न्यूक्लियर अटैक अगर फर्स्ट यूज होगा तो वो काउंटर फोर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता काउंटर वैल्यू से. यानी कि सिविल पॉपुलेशन की आप गारंटी दे सकते हैं कि हमारे जीएचक्यू पर अगर अटैक करता है इंडिया विद न्यूक्लियर वेपन्स, तो क्या आपका जो पिंडी है पूरा, क्या वो तबाह नहीं होगा? डेफिनेटली. एंड इफ वी कैरी आउट अटैक अगेंस्ट न्यू दिल्ली, जीएचक्यू जो वहां पे अगर उनका है कोई, तो क्या उससे जो बाकी एरियाज होंगे सिविल पॉपुलेशन, क्या वो इम्पैक्ट नहीं करेगा? करेगी, लाजमी बात है. सो इसलिए पाकिस्तान इसको अग्री नहीं करता. पाकिस्तान डोंट अग्री विद इट. पाकिस्तान बिलीव दैट हमारी जो न्यूक्लियर डिटरेंस है, जो अल्टीमेट पर्पस है न्यूक्लियर वेपन्स का, दैट इज टू अवॉइड वॉर, टू काउंटर इंडियन वॉर, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वॉर. सो उसकी कोर है हमारी. तो इस तरह नहीं है कि हम कोई इरेशनल किस्म की मुल्क हैं, बट हम कमजोर हैं, वीक हैं इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली. सो दिस इज द रीजन दैट वी डोंट वांट टू रिस्क एनी वॉर. सो इसलिए हमें इंडिया को डरा कर रखना पड़ता है. ऑल राइट, लेट्स सी फर्दर आगे इसका क्या है. और चलो ना भाई. सर मेरा एक क्वेश्चन है. जी बताओ बदू. सर ये जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन होती है, सर ये न्यूक्लियर जो बम्स होते हैं वो हर वक्त इंस्टॉल होते हैं, एक्टिव होते हैं, या जब स्टैंड ऑफ होती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तब वो उससे इंस्टॉल करते हैं? देखो, वैसे तो हमने कहा हुआ है इंडिया और पाकिस्तान ने, क्योंकि हमारा फ्लाइट टाइम बहुत कम है, तो हमने वैसे अपना जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स को डिसअसेंबल्ड फॉर्म में रखा होता है. यानी कि उसकी की अलग है, वॉरहेड अलग है, रॉकेट अलग है. तो उनको असेंबल करने में हमने एक टाइम फ्रेम रखा हुआ है कुछ. ये हमने दुनिया को बताने के लिए किया हुआ है. लेकिन मेरी इंटेंशन, मेरी थिंकिंग के मुताबिक हो सकता है हमने असेंबल्ड भी रखे हों, क्योंकि अब 72 घंटे का वेट तो नहीं कर सकते आप. अगर इंडिया पे अटैक करेगा तो लाजमी बात है आपने भी फौरन से अटैक करना होगा. बहुत सारे ऐसे वेपन्स होते हैं जो आप रेड अलर्ट पे रखते हैं, बहुत सारे वेपन्स, और बहुत सारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है. आजकल सिचुएशन वैसी नहीं है, तो आजकल हमें न्यूक्लियर वेपन्स को मेरा ख्याल है डिसअसेंबल्ड फॉर्म में ही रखना चाहिए. क्योंकि इफ आप उसको रेडी फॉर्म में रखेंगे और जंग का पीस टाइम में, और कोई जरूरत नहीं है अभी रखने की ना, उसमें इंडिया पे अटैक तो नहीं करने वाला, ऐसे हालात भी नहीं है अभी अटैक करने के न्यूक्लियर के, ना वो करेंगे ना आप करेंगे. तो बेसिकली आपने एक दूसरे को डरा के रखा हुआ है. न्यूक्लियर वेपन इज नॉट फॉर यूज, एंड लेट्स अंडरस्टैंड. अगर उन्होंने यूज किया वो भी दबाएं. ये रीजन सेम है, एनवायरमेंट सेम है, मॉनसून जब आती है तो दोनों पे इकट्ठा इम्पैक्ट होता है. तो इसलिए आप खुदकुशी होगी जो भी यूज करेगा ना, और वो तभी यूज करेंगे जब उसकी आखिरी लास्ट रिजॉर्ट पे होगा वो. ठीक है, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे. अगर तो हालात खराब है, जैसे अमेरिका का और सोवियत यूनियन का मसला था ना कोल्ड वॉर में, तो उन्होंने अपनी फोर्सेस को रेड अलर्ट पे रखा हुआ था. बॉम्बर्स उनके तैयार रहते थे हर वक्त. आपको याद होगा पहले लेक्चर में अगर आपने लिया था, तो उसके अंदर मैंने ये चीजें बताई थी आपको कि बॉम्बर्स उनके रेडी रहते थे, हवा में रहते थे विद न्यूक्लियर वेपन. तो वो रेडी होते थे बिल्कुल, क्योंकि उनके हालात ऐसे थे, उनके मसले मसाइल थे. उनके रेडी वेपन जो थे वो क्यूबा में डिप्लॉयड थे. ठीक है, यानी कि जैसे ही अमेरिका को अटैक करने की सोचेगा तो हम क्यूबा से अटैक कर देंगे अमेरिका के ऊपर, टू सेव द फ्लाइट टाइम. वो 4 से 5 मिनट में अमेरिका को हिट कर देगा, इंस्टेड ऑफ अटैकिंग फ्रॉम द मेनलैंड सोवियत यूनियन. सो दैट इज द एस्पेक्ट. ठीक है, तो डिपेंड करता है सिचुएशन ठीक है पे सर. कि आपने उसको कैसे रखना. थैंक यू सर. जी. Starting in January 1992, India and Pakistan have exchanged list of their respective civil and nuclear installations. However, each side has questioned the competence of others' list. मतलब वो कहते हैं कि यार पूरी लिस्ट है आपने शेयर नहीं की, completeness of the list, others' list, यानी कि पूरी लिस्टें कभी भी कोई शेयर नहीं करता.
जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जो जगह हैं वो हम कभी भी शेयर नहीं करेंगे इंडिया के साथ, ना ही इंडिया करेगा हमारे साथ, क्योंकि रिस्क होगा कि यार उसको तबाह ना कर दिया जाए इन फर्स्ट स्ट्राइक. So both countries avoid such things. लेकिन generally they agreed that they are not going to attack each other, and this is the most important thing. अच्छा, इसके अंदर फिर एक और चीज आ जाती है, verification and compliance. The agreement requires an annual exchange of list detailing the location of all nuclear related facilities in each country. The measure further pledges both sides not to attack listed facilities. तो दोनों ने आपस में तय किया कि हम listed facilities पे अटैक नहीं करेंगे. And there are no compliance measures in this agreement. यानी कि इस पे कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप इस पे compliance करें, और बस नहीं करेंगे एक दूसरे पे अटैक, बस ये एक आपस में कहा हुआ है कि नहीं करेंगे बस. These are some of the Pakistani nuclear installations, जिसके अंदर nuclear fabrication है, heavy water की है, milling है, mining है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं न्यूक्लियर की ना, आपको नजर आ रही होंगी. टेस्टिंग साइट्स भी हैं आपके, रिएक्टर्स पड़े हुए हैं आपके, सिविल मिलिट्री दोनों, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हैं कुछ, बाकी यूरेनियम एनरिचमेंट, वेपनाइजेशन, ये सारी वो आपकी डिफरेंट किस्म की इंस्टॉलेशंस हैं जो कि